what is Lang, what is Perol. Lang and Perol पे एक अलग से आपको short answer question मिल सकता है that what is Lang and how is it different from Perol. ठीक है, इस तरह से. Then what are syntagmatic and paradigmatic relationships. तो इस तरह से you can get short answer question on each of these topics, and there can be long answer question in which you have to summarize or explain the ideas that Saussure has given in this essay, The Nature of Linguistic Sign. So these are the questions that you are going to get. I think you can easily prepare these answers. There's no problem in that. Because when you understand things, yeah, it's easy to write. Yes. So understanding is very important. And once if you have understood, then you can attempt it in an easy way. Okay. Now coming to the presentation. Right? Because presentation always makes things easy to explain as well as to understand. And this I cannot do in my offline class today. So this is where I conclude this essay today, as I told you, and many of you have joined late. So again, I'm repeating that this is the last lecture on nature of linguistic sign. And if you have any doubts, then you can easily clear it in the class, in our offline classes as well. And there's no problem with that. And just who is there in the class? Someone has joined? Someone is in the lobby. Yeah, let me. Who's there? Rupali Savita. Okay. Yeah. So this presentation makes it easy to understand. Those who have not clicked the pictures easily, I have added few slides more in this. So those who have not clicked the pictures can they click it sequentially. First, what is structuralism? How Aristotle said that all the that the basis of life is structure. There are different structures which work as a system, and then life becomes system of systems. So there are so many systems that are working. So everywhere you find there is a structure. Structure where all elements they work in a coordinated way. So structure he defined it as any conceptual system that has three properties: wholesome, that means it is complete in itself. Transformation, it changes because the elements there are living, they are dynamic, they are not static. And self-regulation, it regulates, no outside force regulates that structure, it regulates itself. So the basic structure cannot be changed. Then sign, I told you. This is the way that you can represent sign. Sign is equal to signifier by signified. Okay, so this is what you have to draw in your answer. Right? Okay. Then yes, you can also represent it in this way also. Saussure had given the example of, this is a French word, arbre, for tree. Okay, so when he says that when you say arbre, that does not, there is no connection between this particular word and the image that comes in the mind. So I translated it into tree, and I said that if you say tree, then you find that there is no link between the tree and the sound tree and the image, sound image tree and the concept formed. Okay, so this is the way that Saussure represented it. Sign is equal to signified, signifier, concept is signified, sound image is signifier. It is also written in French. You can see it there in the lower diagram. Yes. Right? So, and ARBOR, this is sound image that falls on our ears or that falls on our eyes when we read it. Right? And then see, even in our thoughts, whatever we are thinking in our language. Language exists there in our mind. Okay.
So we are thinking in our language. And so how are we arranging the words sequentially? This is what has been studied here. So linear character of the signal. The linear character of signal means the linguistic, someone has to mute the mic because there is some sound coming. Okay, so linear character of the signal. Linear character, linguistic signal being auditory in nature. Even in our mind, we are listening to it. There is an image, sound image in our mind. So the linguistic signal being auditory in nature has a temporal aspects, temporal timing. And this occupies a space and is measured in line. When you write a line, a space is occupied and is measured in line. The whole mechanism of linguistic structure depends on it, how the words are arranged, how the letters are arranged, how the sentences are arranged. Auditory signals have at their command only the linearity of time. In a straight horizontal way it moves. The spatial line of ग्राफिक साइन मीन्स जैसे ए लिखोगे आप किस तरह से लिखते हो, बी कैसे लिखते हो, तो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना. द स्पेशियल लाइन ऑफ ग्राफिक साइन इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द सक्सेशन ऑफ साउंड्स इन टाइम. स्पेस में वो ग्राफिक साइन के फॉर्म में जा रहा है और टाइम में वो साउंड के फॉर्म में जा रहा है. Okay, so these are the two lines, spatial line and temporal line. This is the linear character of the signal. Okay. Then this we had done, that language is equal to Lang plus Perol. So what is the difference between Lang and Perol? It can be represented in this way, that Lang is abstract, Perol is concrete. Okay, just give me a minute. Okay, Lang is abstract and Perol is concrete. So these conventions exist in the mind of the speakers. These conventions means this Lang, the rules of the grammar, the rules of the spelling. Okay, how the syntax means the structure of the sentence. So these things, whether it is spelling, whether it is how the words have to be arranged sequentially, or how sentences have to be arranged sequentially. This we shall be doing in our language paper also, that when we pronounce these words, how the words are pronounced, that is phonology, right? Then how the words are built up, that is morphology. Then how sentences are built up, that is syntactics. Okay, so all the conventions, they exist in the mind of the speaker who belong to that society. We are Hindi speaking people, so the conventions of Hindi language, they exist, the Lang of Hindi language, it exists in our mind because we belong to this society. This society has created this language. Who belong to that society that created the language, right? So Perol is concrete, it is our utterance, so it is physical, it is not abstract, it is physical, and it makes use of the physiological mechanism. Physiological mechanism we had done in our last semester, speech organs, speech mechanism, how the words and sentences are uttered, all these things. So this is what is Perol. Okay? Yes, ma'am. The synchronic diachronic we did in detail yesterday, and so see, Saussure identified these two temporal dimensions of language study in his book Quotes in General Linguistics, 1916. Diachrony is evolutionary through the time, gradual change. So evolutionary phase of the language. And synchrony is language state. At this time, in what state the language exists, or in past, how the language existed. Their comparison is not done. Okay.
Got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Diachronic, फिर ये सारा हमने किया था, that it is historical in nature, and phonological, grammatical changes through the time, semantic changes. Semantics means meaning. Syntax means structure of the sentence. Then synchronic, we compared it with Hindi spoken in Madhya Pradesh, Hindi spoken in NCR, right? So this we had done with an example. Now coming to syntagmatic and paradigmatic relationship. Now this is where we begin with today. What is syntagmatic, right? And what is Yes, ma'am. paradigmatic? So this relationship when we study, so see the root word sin. Sin means same time. ठीक है ना? We did it yesterday that synchronic बोला था तो sin था तो मतलब same time. तो इसी तरह से syntagmatic means is the one where signs occur in sequence. Signs occur in sequence means like W, H, E, N, right? W, H, E, N. These letters, they are signs and they occur in a sequence. After W comes H, then comes E, and then the word is formed called when. Okay, so this is the syntagmatic relationship that is existing between two letters, two words, when the letters are signed, when the words are signed, or when sentences are signed. तो जब sequence में relationship बनता है, okay, parallel में बनता है और एक साथ मिल करके वो एक meaning create करता है. WHEN letters sequence में हुए और ये बन करके there is voice. Please mute your mic. Please mute your mic. Who's there? Okay, thank you. So, sorry. Yeah. So, sequence में WHEN है ना, ये ऐसा लगा sequence में जब arrange हुआ तब इसकी एक meaning आई. When, कब, right? So, WH के बीच में क्या relationship है? Syntagmatic. When are you coming? When और are ये दो साइन हैं, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? सिंटैग्मेटिक, क्योंकि when के बाद are आएगा. When are you coming, है ना? When is this happening? When और is के बीच में सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप है. This happening के बीच में सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप है. So thus, for example, the letters in a word have syntagmatic relationship with one another. Okay. And so do the words in sentence. They have, yeah, objects in a picture, they have syntagmatic relationship. So syntagmatic relationships are often governed by strict rules. Spelling WHEN ही when होगा, WNEH नहीं होगा. Okay, तो rules हैं किस letter के साथ क्या combine करता है. Spelling SP, strict ST. Okay, so these are the rules. All the spelling rules, all the grammar rules, they tell that how the words or letters they are existing in syntagmatic relationship. Okay, they can also have less clear relationships such as those of fashion, social meaning. अब ये हम सिर्फ language पर focused हैं, लेकिन अगर हम society में देखें तो हर स्ट्रक्चर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर्स हियर, तो स्ट्रक्चर किसमें? लैंग्वेज की. तो ये स्पेलिंग और ग्रामर और सिंटैक्स ये सारी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन इसी स्ट्रक्चरलिज्म को या जो सॉशर ने सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप वाली बात कही है, इसको अगर हम फैशन में देखें या हम सोसाइटी में देखें तो उसमें कुछ लेस क्लियर. वी आर नॉट गोइंग टू दिस, बट स्टिल आई जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस यू दिस, राइट? देन कम्स paradigmatic relationship. Paradigm. Now, paradigmatic relationship is one where an individual sign may be replaced by another. कैसे? Paradigmatic relationship में
when one word is replaced by another, तो ये vertical relationship हो गया, वो horizontal था. So just for example, take any word. You take mat. mat में m को replace कर दो r से, rat. Replace कर दो c से, cat. Okay, so individual letters have paradigmatic relationship with other letters, as where one letter is used, another may replace it. Any letter cannot replace number. So numbers and letters, they do not have paradigmatic relationship. आप होटल में जाते हो, आपको मेन्यू मिलता है, मेन्यू में स्टार्टर्स लिखे होते हैं, स्टार्टर्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं 5-7. सो दीज ऑल थिंग्स दे आर स्टार्टर्स, मीन्स इसकी जगह आप ये भी ले सकते हो, इसकी जगह आप ये. इसी तरह से मेन कोर्स में फिर आपके पास बहुत सारी, फॉर एग्जांपल रोटी के लिए कितना सारा होता है. यू कैन टेक नान, यू कैन टेक मिस्सी रोटी, यू कैन टेक, सो दीज नान, मिस्सी रोटी एंड वॉट एवर इट इज कमिंग, दे आर ऑल इन पैराडाइमेटिक रिलेशनशिप विथ ईच अदर. ऐसे आपको लास्ट में स्वीट्स मिल जाएगा. तो डेजर्ट्स, सो डेजर्ट्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय स्टार्टर, स्टार्टर्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय मेन कोर्स, राइट. लेकिन तो वो जो है वो किस में रिलेशनशिप में है, वो पैराडाइमेटिक रिलेशनशिप नहीं है ना. और ये अगर आप एक चीज को दूसरी चीज से रिप्लेस कर सकते हैं तो दैट इज पैराडाइमेटिक रिलेशनशिप. तो क्या बात हुई कि सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रिक्ट रूल्स होती है, लेकिन पैराडाइमेटिक रिलेशनशिप में चॉइस होती है. तो कोर्सेस हैव सीक्वेंशियल रिलेशनशिप. स्टार्टर की जगह मेन कोर्स नहीं ले सकता, मेन कोर्स की जगह डेजर्ट्स नहीं ले सकते, तो वो सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप है, राइट. एंड thus an item from the starter menu does not have a paradigmatic relationship with the sweet menu. Paradigmatic relationships are typically associative. You associate something with something. In that, both items are in single member relationship. Right? Yes, ma'am. Yeah. So now, syntagmatic relationship. So Saussure, he sees sentence as a combination of linguistic units. Linguistic units means first there will be article, then there is noun, right? Then there is auxiliary, a verb. इस तरह से पूरा sentence बनता है. तो these units, they have chain relationship. The unit acquires its significance by its preceding or following elements. जैसे हम कहें रेखा plays badminton every day, है ना, ये एक सेंटेंस, रेखा plays badminton every day. तो noun, then verb, object, the second noun, then adverb. तो इस तरह से वो arrange होता है. तो elements occur in a linear order. And this construction or order is strict. It is bound by rules and it cannot be changed. Syntagmatic relationship is one where signs occur in sequence or parallel and operate together to create meaning. The sequential nature of language means that linguistic signs are syntagmatic relationship. ठीक, चेंज कर दो. Yes, ma'am. Okay. So, Yes, ma'am. and paradigmatic relationship. Paradigmatic relationship is one where an individual sign may be replaced by another. Individual letters, paradigmatic relationship with other letters, where one letter is used, another may replace it. जब एक लेटर को दूसरे, जैसे cat sat on the mat, मीता sat on the mat, तो cat और मीता, है ना, तो मीनिंग चेंज हो गई, बट दे कैन बी रिप्लेस्ड. लेकिन लेटर्स और नंबर्स do not have paradigmatic relationship. Paradigmatic relationship operates on the levels of signifier, signified, or both. Paradigm is a set of associated signifier, yes, signified, which are all members of some defining characteristic. Noun replaced by noun,
verb replaced by verb, okay, but in which each is significantly different. In all languages, there are grammatical paradigm set of nouns and verbs. Paradigmatic relations are those which belong to same set by virtue function they share. Virtue of function, क्या noun का क्या function है, तो दूसरे noun से आप कर दो, उसका function वही रहना चाहिए, ठीक है. So like paradigmatic relations, syntagmatic relations can operate at all linguistic levels. All linguistic levels मतलब words, letters, sentences. In the phrase the boy, अब जैसे हम boy बोलेंगे the boy, है ना, determiner plus noun. We can put a variety of items between the boy, but we are not permitted to reverse them. बॉय के बीच में हम क्या डाल सकते हैं, द टॉल बॉय, द फैट बॉय, द गुड बॉय, बीच में आप कितने भी, द डार्क टॉल बॉय, है ना, तो इसमें कितने भी आप बीच बीच में डाल सकते हैं, लेकिन द के बाद बॉय आएगा, बॉय द से पहले नहीं आएगा. So paradigmatic and syntagmatic relations together constitute the identity of an item within the linguistic systems as a whole. ये relations क्या करते हैं कि किसी भी item को एक identity देते हैं. कोई भी linguistic item हो, चाहे वो phoneme हो, मतलब pronunciation हो, morpheme हो, कोई भी word हो, या sentence structure हो, it can be characterized and identified by it. ये 2 points याद करना है. Where it is able to occur sequentially with other units, यानी किस तरह से वो distribute होंगे, and referring to the set of the terms with which it can be interchanged. Substitute कैसे हो सकते हैं? Distribution की आप बात कर रहे हैं syntagmatic, और जब replacement की या substitution की बात कर रहे हैं paradigmatic. Paradigmatic. Yes. Yes, ma'am. राइट. अब हम इनके आइडियाज को समराइज करते हैं. सो शॉर्ट्स आइडियाज समराइज करेंगे तो क्या है, फर्स्ट दैट लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम स्पीच. लैंग पेरोल, है ना, लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम स्पीच, स्पीकिंग, राइटिंग, स्पीच, स्पीकिंग, राइटिंग, दिस इज ऑल पेरोल. ओके, तो लैंग्वेज इज, देन लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साइंस. Language, पहली बात, language is a system. System means there is some kind of order here in this. There are some kind of rules of what? Of science. Everything here is a sign, right? और उन sign का अपना एक system है, and this is what is language. Okay. Then linguistic science have values in relation to other science. तो relationships हैं. जो भी साइन है, they have values in relation to other sign. दूसरे साइन के साथ उसकी क्या रिलेशनशिप है. Then language without society exists artificially. Language हमेशा सोसाइटी के अंदर वर्क करेगी. सोसाइटी के अंदर जब वर्क करेगी तो उस समय सोसाइटी में किस तरह की लैंग्वेज बोली जा रही है, उससे पहले किस तरह की लैंग्वेज बोली जाती थी, तो ये टाइम फैक्टर काम करता है. तो स्टैटिक यानी कि सिंक्रोनिक, इवोल्यूशनरी यानी कि डाइक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स. सेवेंथ पॉइंट, लैंग्वेज इज नॉट नोमेनक्लेचर. ट्री को हम ट्री बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, वो रिलेशनशिप आर्बिट्रेरी है, उसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है. ट्री को हम ट्री इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो ट्री स्टोन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल है, देखो लैंग और पेरोल को समझने के लिए Saussure had given an example of game of chess, है ना. चेस में कुछ रूल्स होते हैं ना चेस खेलते समय, तो वो जो रूल्स हैं Yes, वो आपके दिमाग में है ना. there are so many options कि क्या क्या, जब आप उसमें चाल चलते हैं तो वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस हो जाती है कि आप कौन सी चाल इस समय चलेंगे. तो जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो आपके दिमाग में हैं, दैट इज लैंग. और आपकी हर जो चाल है, दैट इज योर स्पीच, योर स्पीकिंग, सो दैट इज पेरोल.
ठीक है। और जो हम कहते हैं लैंग्वेज इज नॉट नोमेनक्लेचर, इसका एक एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल यू से दैट दिस कलर इज रेड, ओके, व्हाई इज इट रेड? बिकॉज इट इज नॉट ब्लू, येलो एंड ऑल दैट, ठीक है। लेकिन अब अगर हम उसमें एक और कलर जो हम कभी बात नहीं करते हैं ज़्यादा, मरून आ जाता है जैसे, है ना, या कोई और इस तरह का कलर आ जाता है, तो हम स्पेशली उसको मरून बोलेंगे, उसको रेड नहीं बोलेंगे। या रस्ट कलर बोलते हैं ना, इट्स रस्ट, रस्ट कलर, व्हाई? Yeah. अब उसने रस्ट ने या मरून ने क्या रेड वाली जगह को ही ऑक्यूपाई किया है, कोई नई जगह नहीं बनी है। Is it clear? Red is red because it is not Yes, blue and ma'am. everything else. Then when you add some other color to it which is closer to it, तो उसने red की ही जगह ऑक्यूपाई की है और आपने फिर उसको red से डिस्टिंग्विश किया है। जब आप मैरून बोलते हैं तो आप स्पेशली बोल रहे हैं मैरून है, रेड नहीं है। Yes, ma'am. Right? So that is the difference, that language is not nomenclature. So this is what I had to explain you today, and I hope that these things are now clear to you. Is Yes, it? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So how did you like this essay? Just wait, let me ask you one question. All the vegetables, what kind of relationship exists between all the vegetables? It is paradigmatic or syntagmatic? Ma'am, paradigmatic, Why? because it can replace Yes, it can replace any other vegetable. any Okay, other and vegetable. Yes, ma'am. what type of relationship will exist between say different flowers? Flowers. Rose, jasmine, rose, jasmine, and marigold, lotus. So what kind of relationship exists between them? Oh, Aarti, I just saw at the back there is a whiteboard. Lang Perol सब लिखा हुआ दिख रहा है. Where are you sitting? Ma'am. अच्छा है. घर पर हो? House. Yes, ma'am. This is a wonderful way of learning. बहुत अच्छा लगा ये देखकर. दिखाओ अपना जरा वो whiteboard सबको. Wow, this is so nice to see. This will help you a lot, you know, if you are preparing for net and all that. Yes, very good. बहुत अच्छा है. इस तरह से लिख कर आप प्रैक्टिस करोगे ना, कॉपी पर, रजिस्टर पर, दीवारों पर, है ना, और कुछ इस तरह के चार्ट्स बना करके घर पे ही लगा लोगे, तो यू विल लर्न दीज टर्म्स एंड देन अगेन यू हैव टू से इट अगेन एंड अगेन. Yes, ma'am. बोलो तो what is synchronic, what is diachronic, what is syntagmatic, what is paradigmatic, what is Lang, what is Perol, what is science, signifier, signified, ये सब जितना बोलोगे बार बार दिमाग में चलो तो वो. अदरवाइज स्ट्रक्चरलिज्म में ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं Saussure is very difficult to follow, समझ में नहीं आता है. तो जितना आप उसकी वो प्रैक्टिस करते जाओगे ना, उतना अच्छा आपको फिर समझ में आता चला जाएगा. और अभी आप लोगों को समझ में आ गया है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर that you have understood all these things. Yes, ma'am. और ये प्रेजेंटेशन की वजह से मुझे भी समझाना बहुत इजी पड़ा और आप लोगों को समझना बहुत इजी पड़ा. प्रेजेंटेशन के बिना खाली जैसे क्लास में बोलते हैं या ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं, उससे इतना पूरा नहीं हो पाता है. तो थैंक्स टू दिस वर्चुअल क्लासरूम दैट मेड पहली बार. Thanks to you, ma'am. Thank you, ma'am. नहीं पढ़ा थे, मोस्ट वेलकम. पढ़ा तो हर साल रहे थे, लेकिन पढ़ाना इतने इजी ऐसा लगता था, क्लास में बोल रहे थे तो हवा में बोल रहे हैं, पता नहीं समझ में आ रहा है या नहीं, और हमें भी एक्सप्रेस करने में बड़ा वो लगता था. लेकिन विद दिस बैच आई एम रियली वेरी हैप्पी कि बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने, टेक्नोलॉजी इज रियली हेल्पिंग अस. Thanks to Yes, technology. Okay then. So I think there's nothing else to say. If there's any doubt, then you can ask me. या फिर अभी चलो क्लास में मिलते हैं.
पहुंचना है कॉलेज जल्दी से. It will take at least 20 minutes to me or 25 minutes to reach. तो अगर इसी चीज को मैं रिपीट कर दूंगी. If you want to come, you can come, and if you are satisfied, then okay, then prepare for your exam because there's really very less time and you can't afford. Yes, ma'am. आपके आने जाने का पेट्रोल का पैसा भी बच गया. खूब अच्छे से पढ़ो. इट्स वेरी नाइस टू सी. विद इन उसके लिए नेट के लिए अप्लाई जरूर करना. ओके. Sure, जब भी ma'am. डेट्स आती हैं जस्ट ट्राई इट. ओके. एंड रीड अदर थ्योरीज आल्सो. रीड रिस्पांस थ्योरी क्या है, नियोक्रिटिसिज्म क्या है ना, ये सब. रोलैंड बार्थ्स में जाओ. क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का नाम मैंने नहीं लिया, लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म में ही इज वेरी इंपॉर्टेंट. रोलैंड बार्थ्स एंड क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, ये सब पढ़ के देखो. एंड हाउ ये जो है ना, ये Saussure ही बिगैन स्ट्रक्चरलिज्म. लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म एज अ न्यू लाइन ऑफ थॉट, लिटरेरी मूवमेंट किस तरह से डेवलप हुआ और फुल फॉर्म में जब आया वो किस तरह से आया. तो दिस काइंड ऑफ स्टडी यू कैन डू. इट विल हेल्प यू अ लॉट. Yes. ओके. ओके देन हैव अ Yes, नाइस डे. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम.